Namaste everyone and welcome to the last and series finale of Bharat Bhagavata. There are a lot of objects in my room today. There was a room cleaning session today which I did. Actually, my mom did. So let's start with the series finale of Bharat Bhagavata. Today we are going to host this session exclusively on YouTube only. Yesterday we did both on simultaneously on YouTube and Instagram, and the response on Instagram was amazing. But the reason is because you can enter and exit the live whenever you want, text anyone, and come back to the session. So that is one feature which Instagram provides you. However, we have it like I am more comfortable with doing these sessions on YouTube because of several reasons. But wasting no more time, we will start with today's session. Today's session, we are going to talk about Tranche 4 and Tranche 5 of the Atmanirbhar Bharat Abhiyaan. I'm sorry. And again, we are going to start with a story today. And this story is not of any other country. It's not of any other group. It's about one man. It's about one man and his kingdom, and he's none other than uh, Chhatrapati Shivaji Maharaj. And you may have heard his valor stories in your history textbooks and through other sources. But there is this one particular stories which every time inspires me, not because of his valor, but that is the story of his patience when he dealt with the Mughals and prepared for the Mughals by his and with his patience. So the waiting game of any other person or Chhatrapati Shivaji Maharaj was greater than any other person. And there are two instances which I would like to tell you, like the patience, the mental preparedness to go to into any situation, rebuild yourself, and then jump back into the game. So one of this instance is when the Sardar of Adil Shahi, Afzal Khan, came into Chhatrapati Shivaji Maharaj's Swaraj, and he looted all the villages on his way. He captured all the posts or subhas, as we say, and he came till Vai, which is near Satara Mahabaleshwar, and he captured everything till then. Burned villages, did all the things which cannot be said from on a public session. Everything. Um, and Shivaji Maharaj waited. You know the story that he came to meet. The meet was unsuccessful for Afzal Khan because Shivaji Maharaj killed him there. And from there, in 29 days, if you see the map right now from Satara to Pune, Satara to Kolhapur and Vishayagarh, then you might have only one or two districts in your geographical landscape. So the distance is not much, but at that time it was a lot because you had to win a lot of forts, you had to restructure a lot of subhas, which is the military posts. So what happened was after killing Afzal Khan, Shivaji Maharaj did not go back to Rajgarh. Shivaji Maharaj was so prepared and so well prepared that from Panhalgarh, from Satara to Kolhapur and Vishagarh, he captured all the forts back from Adil Shahi in just 29 days. So he did not just prepare to kill Afzal Khan, but he also prepared what to do after I kill Afzal Khan. Okay, this is one story. The second story is, you know, the escape from Agra. And this escape from Agra is equally vigorous, equally smart, absolutely convincing. But then this escape was followed by something very historically miraculous events. And that was nothing happened. After Chhatrapati Shivaji Maharaj escaped from Agra and he came back to Maharashtra and Raigad at that point of time, for next 2 to 3 years, Shivaji Maharaj did no campaigns. He did. History has very less mentions of any campaigns done by Chhatrapati Shivaji Maharaj. Very less campaigns. 2 3 years, he concentrated on rebuilding everything, rebuilding his army, his wealth, so that after 3 4 years, when he restarts his campaign forward, he retakes all the forts, all the land which was taken by Maharaja Jai Singh of Mughal Darbar, and in
After 2 3 years, he started his campaign again with capturing Kondana Fort. You know, the movie Tanaji was released on the same war. And from there to his Rajyabhishek, he almost doubled the size of his kingdom. So, Tranche 4 and Tranche 5 are all about this patience and preparation. Tranche 4 and Tranche 5 are all about not just key what should we do with the problem at hand, but what should we do in the period when we have won over the coronavirus and jump onto the next phase of post corona global history. Here I would like to mention two things. First is uh, Sri Avinash Dharmadhikari sir has written a wonderful article on defining moments of history, and he has mentioned that Corona crisis will be also one of the defining moments of history uh, in the world. So, this kind of crisis has given us an opportunity to sit back with patience and reevaluate what we are going to do after we win over this crisis. So, uh, this signifies two things. The government is very pragmatic and is very positive about we are going to defend this virus. We are going to defeat this virus and go forward, go ahead. So it has not just planned about the crisis at hand, but also plan what to do when we are out of this crisis and when economic structure will need most flexibility for to go forward. And tranche 4 and tranche 5 are all about these reforms, but again we should not forget that these reforms are an extension to the NDA government's policy which was going on for past 4 to 5 years. Now this might be the case here that T4 and T5 are again distributed in different sectors and different. We have a 2 3 page note today. It's not a lot, but then there's a lot of explanation which goes into explaining why these reforms. So we will start with the most elaborative part of the T4 first, tranche 4, which is coal sector. Now, coal is one of the most important fossil fuels of India. It's almost 55% fuel used in India for production, electricity production, metal production, so on and so forth. Then, if you look at the history of coal, nationalizations have taken place of non-coking and coking coal mines in 1971 to 1973. After 1991 reforms, uh, there was something called captive coal mine allocation done. Now, what is captive coal mine allocation in 1991 reforms, LPG reforms? Captive coal mine allocation is basically if I am a producer of iron and I need coal for my purposes, then the government will auction these coal mines to only people who want or only the companies who want to consume the coal for their internal purposes and not external purposes. Just a minute. Um, Now, being said that, this captive coal mine allocation was going on till almost 2018 when the cabinet committee on economic affairs decided that okay we should privatize coal sector. And in any mining operations there are three stages basically: exploration, mining, and production. So for this kind of activity, what happened was that the coal mines were privatized in a way. So 2019 April, there was a scheme launched by the government which is called Uttam. Now this Uttam scheme is basically third party assessment of mined coal, application of coal quality monitoring. This is basically giving a third party the responsibility of coal quality monitoring. Now there are different coal is not just one. आपको जो दिखता है, it's not just one coal. There are different qualities of coal. So, I mean, there is anthracite, there is bitmus, lignite, peat. Anthracite being the topmost quality, bitmus most found in India. Then there's lignite, and then there's peat. So, this quality exploration
was given to a third party, so things could be sold in their right price. So the government could fetch the right price of these mines. Okay, so now with this background of coal sector that which was first nationalized, and then it was partially nationalized and partially privatized, but privatized for people who wanted coal for their domestic consumption and not for selling it off to the market. What government says here is a first self-reliance in coal sector to be introduced, where there should be competition, there should be transparency, and there will be it will be open for private sectors. Then revenue sharing mechanism. Revenue sharing mechanism will not be rupee per ton, so it will be changed from rupee per ton to third party sale also. So captive coal mining or captive consumption cap will be reduced from or will be negated from this whole process now. So if I am a company, I am a manufacturing company and I have bought two coal mines in the region of Jharkhand and Orissa, then I could not sell these mines or sell coal from these mines to market. What this policy says that you can do two things. If you have two coal mines, I can use the first coal mine to my consumption to produce iron, and I can sell off or lease this second coal mine into direct market. So it is now freeing up the coal sector to private investment also. Here are the back turns or back fires of this policy, or negative sides of this policy. A, coal mining happens in India at least in the most forest covered areas or tribal areas, which is Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh. So basically, there is this geography region called Gondwana Plateau region in India. It is the oldest plateau region and one of the oldest plateau regions. And there are different Hazaribagh plateau here. There's Chota Nagpur plateau, and these plateaus are famous for coal production in India. However, these plateaus fall under dense forests. सो इधर फॉरेस्ट एक्ट ऑफ इंडिया अप्लाई होता है, और जहां वहां ग्राम सभा का परमिशन आपको लगता है, इसका परमिशन लगता है, यू हैव टू शेयर योर प्रोसीड्स, माय यू कैन नॉट पोल्यूट अदर एनवायरनमेंट, जितना दिया है उतने ही हेक्टर में काम करना है. देयर इज अ heck lot of restrictions for government as well as private consumers. However, if you throw this sector to private investment and transferred sales or direct sales to the third party, then it might risk two things. First thing is exploitation of forest resources. So it might give, because it was government owning mines before this, um, you could really file cases against government right and left, and government had to keep it slow. With increase in capitalism and private sector investment in coal mining, what has happened is it might give increase to corruption in the area. It might give increase to what do we say, exploitation of tribal people in the area. So these are the backdrops of the coal policy of India. Now you go to the second provision of the coal sector, which is 50 blocks are offered immediately to the coal production for auctions. And government has invested 50,000 crores upfront in two things, actually three things. First is coal gasification and coal liquidation. Now, this is a new technology. So, the government is still saying, okay, we will invest upfront, that you or private companies can also utilize these things later. Second, it says that coal bed methane exploitation or coal bed methane extraction rights will be also auctioned. But for this, now coal bed methane is basically a gas which is found in coal mines or while extracting coal mines underneath the ground. So this the extraction of coal bed methane is very difficult. The technology is not very much standardized right now, but the government has upfrontly said, ki, okay, even if that is the case, we will give out these mines and coal bed methane extraction rights to private sector. So this is what the government has done in coal sector.
Mineral sector, I think the case is similar here. That introduction of exploration and mining production regime. So what has happened is, before there were three different licenses. Now in License Raj of India and post License Raj of India also, there were three types of licenses for mining in India. Now we are moving from coal mining to mining. First is exploration. So basically, you find whether there is any mineral underneath beneath the land we are searching. Second is what you do is mining. After exploration, you actually dig into the soil, dig into the ground, create mines. That is called mining. And third is production. Now you just don't extract the ore, but you also make it into a fine material. What the government is saying that now we will combine all these three licenses, so you don't have to apply three times, give money three different places in three different auctions for competitive bidding. We are giving you an option that you come and take these three combined licenses altogether. This is what it says. Second, it says that now there are a lot of, in science and chemistry, that there is a lot of alloy production involved. Now steel is an alloy, there's aluminum, there are different kinds of alloys we use in day-to-day life. Now if I'm a manufacturer of an alloy, then uh, it would be necessary and it would be easier for me to have license of mining into all the minerals which are required for the production of minerals. मतलब for example, अगर I am a producer of aluminum, I am a factory owner of a aluminum production company. I make aluminum sheets. अब उसमें कोल लगता है और बॉक्साइट लगता है एल्यूमिनियम प्रोडक्शन में. बेसिक मैं बोल रहा हूँ, बाकी मिनरल्स भी लगते हैं, बट बेसिक. अगर इन दोनों का लाइसेंस मुझे एक कंबाइंड फॉर्म में मिल जाए, सो दैट विल बी मच इजियर फॉर मी to start my business and sustain my business. So the government is saying here that we will give you a combined license of producing. If you're producer of an alloy, then we will give you a combined uh, license of extracting both the metals. Now, three very important sectors which were talked in Tranche 4: defense, atomic sector, and space sector. First, we will talk about the defense sector. Defense sector, may they have done two things very important and very much criticized for basically. मतलब मुझे समझता ही नहीं है कि what is this whole debate about if FDI बढ़ा दिया गवर्नमेंट ने डिफेंस प्रोडक्शन में, नेशनल सिक्योरिटी पे बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कर रही है गवर्नमेंट, बट that's half lie. And that's half truth actually. It's full lie, full BS, but half truth. Why is it so? Because they miss out on the first provision which has done by the government. Government says that we will focus on make in India and self-reliant India in defense procurement and defense production. So what it implies is the government will notify a list of parts and weapons and platforms year-wise on a yearly timeline, where it says that we will publish a list that these things will be banned to be imported, not to be produced in India. For example, there's an assault rifle. Then this assault rifle, we are importing it from Israel, Russia, and the United States of America. This assault rifle is listed in the list which I'm talking about. It is banned to import. So the producers will have to make this rifle in India only. Let me explain you the difference here. Global domestic product and globe gross domestic product. I'm sorry, gross domestic product and gross national product. अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या हम बोलते हैं? डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब इंडियन टेरिटरी में जो चीज बनती है उसका वैल्यू. नाउ दिस इज टॉकिंग अबाउट लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन and not nationality of production. Gross national product says that nationality of locations, nationality of production पे हम डिसाइड करेंगे कि वैल्यू ऑफ नेशनल प्रोडक्शन क्या है और नेशनल वैल्यू क्या है. तो यही बात है इधर भी
कि व्हाट गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रहे हैं। तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन कोई भी करे, उससे हमको कोई भी लेना देना नहीं है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन कोई भी करे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बट नेशनल प्रोडक्शन नहीं चाहिए, इंडिया के टेरिटरी में प्रोड्यूस होना चाहिए। इसलिए द गवर्नमेंट सेज ऑन वन हैंड वी विल बैन इंपोर्ट्स ऑफ सच आइटम्स फॉर डिफेंस प्रोडक्शन, बट increase foreign direct investment in the defense sector from 49% to 74%. It doesn't say foreign indirect investment. Matlab, if I am sitting and I am an investor in the United States of America and I can buy 70% shares of a defense manufacturing product company in the Bombay Stock Exchange, that is called foreign indirect investment. Foreign direct investment मतलब अगर I am a producer of Rafale planes. Dassault कंपनी जो है इट्स अ प्रोड्यूसर ऑफ रफाल प्लेन्स। अगर रफाल प्लेन को डाल दिया उस लिस्ट में, बैंड लिस्ट में, कि जहां जो जिससे इंपोर्ट बैन हो सके जिसका, तो दसाल को झक मार के इंडिया में आना होगा, 74% तक खुद इन्वेस्ट करना होगा प्लांट सेटअप के लिए। पर उससे तो दो चीजें होती है, वन इज डोमेस्टिक एम्प्लॉयमेंट एंड सेकेंड इज डोमेस्टिक स्किल प्रोडक्शन। तो इफ फॉर एग्जाम्पल there are 10,000 workers employed by Dassault production Rafale in India. Okay, the plant starts anywhere in India. And if after some time Dassault takes off कि हमको नहीं इधर प्रोडक्शन करना है, बट तब तक बहुत सारे डिफेंस कंपनीज ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं। तो वो जो 10,000 लोग हैं जिन्होंने उस कंपनी में काम किया है, नाउ दे हैव अक्वायर्ड एन एक्सपर्टीज टू मैन्युफैक्चर डिफेंस प्रोडक्ट्स। So if Dassault and Rafale production takes off from India, but till then a lot of other companies in different product manufacturers have come in India, then they can be employed there also. तो ये जो स्किल डेवलपमेंट सेक्टर है इंडिया में, people there are people and people are unemployed, but people लोगों के पास adequate skills ही नहीं है। डिफेंस प्रोडक्शन में कितने लोगों ने काम किया है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं उन्होंने ही काम किया है, हाल में काम करते हैं। अगेन इट्स एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। नासिक इधर ओझर में जो फैक्ट्री है, बैंगलोर में एक फैक्ट्री है। तो ये सब जो लोग हैं वो सरकारी मतलब वर्कर्स, उनका skill is restricted. But does general youth in India have a category where some people are absolutely expert in defense manufacture? No, that's very very rare. That is what the government of India is trying to say कि आप हम import नहीं करेंगे, but हम FDI बढ़ाएंगे जिससे foreign investors इंडिया में आके अपना प्रोडक्शन बढ़ा सके। That's one thing. Second thing is what they have done is atomic sector. Atomic sector में तीन चीजें उन्होंने की है। They have not privatized nuclear energy production in India. I read some fake news, some leftist page, some liberal page said, nuclear India heading towards second Chernobyl because the government of India has privatized nuclear. मतलब ये सिर्फ गलत न्यूज नहीं है, फॉल्स न्यूज है, नेशनल सिक्योरिटी से खिलवाड़ करने वाली न्यूज। थ्री सेक्टर्स वेयर इंडिया हैज परमिटेड कि आपको एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक सेक्टर के आजू बाजू में आपको लाया जाएगा। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग, देयर इज अ प्रोडक्ट कॉल्ड येलो केक। ये येलो केक है, उसको मतलब मैं बोलूंगा कि इट्स अ स्लैंग नेम फॉर अ मिनरल कॉल्ड यूरेनियम। यूरेनियम एक मिनट, आई एम सो सॉरी। यस, यूरेनियम प्रोडक्शन के टाइम पे बहुत ज्यादा सेफ्टी की भी जरूरत होती है इन बोथ द टर्म्स। ए, दैट अ पर्सन हैंडलिंग यूरेनियम is not exposed to its radioactivity, and second is uranium is not stolen। ये जो डार्क नेट आप देखते हैं, डार्क नेट पे यूरेनियम का सेल होता है, इट्स वेरी रेयर, बहुत बहुत ज्यादा टाइम से फेक ही होता है, इसमें कुछ मैट सब्सटेंस नहीं होता। बट देन येलो केक का स्मगलिंग, येलो केक इज बेसिकली यूरेनियम 238, बिकॉज 235 तो हो नहीं सकता। 235 आपको वो सेंट्रीफ्यूग में डाल के आपको उसको घुमा घुमा के उससे 0.2% एक्सट्रैक्ट करना होता है, तो दैट इज डिफरेंट। बट
Even procuring uranium-238 or thorium or plutonium are very very rare instances, and it is most of the countries who are nuclear capable, these things are uh, under extreme scrutiny and ownership of the government. Government does not give out uranium, plutonium, and thorium so easily. Basically, radioactive elements which can be used for two purposes: nuclear energy production and nuclear missile production. तो ये गवर्नमेंट देती नहीं है, बट गवर्नमेंट ने एक्सेस दिया है. गवर्नमेंट ने थोड़ा सा मिनरल एटॉमिक टेक्नोलॉजी में एक्सेस दिया है, जहां प्राइवेट सेक्टर भी थोड़ा सा ये चीजें एक्सेस कर सकेगी इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज. फर्स्ट इज कोबाल्ट 60. A cobalt 60 again is a radioactive element used to cure cancer. तो इसमें आगे रिसर्च करने के लिए गवर्नमेंट विल ऑन अ पीपीपी बेसिस establish research labs and go on to make such provisions. Second is a tech entrepreneurship research facility. Now this is basically a sandbox कि जहाँ different technologies which can be मतलब क्या होता है, I'll tell you very frankly. जो जो चीजें गवर्नमेंट के ओनरशिप में रहती है वहाँ इनोवेशन बहुत कम होता है, except from technologies like BARC, not even BARC, DRDO और इसरो. बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट्स के अंडर चीजें आती है उनमें इनोवेशन की बहुत कमी होती है. और इनोवेशन कब बढ़ता है, जब तुम थोड़ा सा पब्लिक के लिए भी ओपन करते हो, बिकॉज पब्लिक गिव्स यू डिफरेंट डिफरेंट सजेशन. सो नाउ द गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम न्यूक्लियर चीजों में भी आपको थोड़ा सा मतलब एक्सेस देंगे, जिस जिस वजह से आप न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी थोड़ा सा रिसर्च इनिशिएटिव ला सकोगे. Third thing which the government is allowing is food preservation through irradiation technology. What is irradiation technology? Irradiation technology is basically जो कोई भी FMCGs होते हैं, कंज्यूमेबल ईटेबल प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स होते हैं, जैम होता है, अलग अलग चीजें, उनमें से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मारने के लिए जो न्यूक्लियर एटॉमिक टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसको बोलते हैं इरेडिएशन टेक्नोलॉजी. सो दिस इज द न्यूक्लियर पॉलिसी एक्सपेंशन. लास्ट आया है इसका स्पेस पॉलिसी एक्सपेंशन. नाउ स्पेस पॉलिसी एक्सपेंशन में ऐसी चीज है कि दिस वाज अ लॉन्ग टर्म रिफॉर्म व्हिच वाज ऑलरेडी नीडेड. मतलब इसरो इज डूइंग वंडर्स, बट इन द एंड इसरो में जो लोग आ रहे हैं वो इंडिया से ही आ रहे हैं ना, हम कहीं से इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं. या फिर इसरो में खुद का कोई ऐसा मतलब चाइल्ड इंक्यूबेशन सेंटर नहीं है कि मतलब इसरो के लोग जो मतलब इसरो के बच्चे इसरो में ही जाएंगे, और दीज आर द स्पेशल स्पीशीज ऑफ इंडियंस हु आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी डिफरेंट. इसरो में इंडियन लोग ही आ रहे हैं, तो मतलब इंडियन लोगों के पास वो टैलेंट है, वो ग्रे मैटर है फॉर द स्पेस टेक्नोलॉजी. सो गवर्नमेंट इज throwing open the opportunities in space technologies when it comes to a level playing field in launching of rockets and space technologies, then satellites and its purposes and different satellites to be thrown into orbit. And third is space-based services. Space-based services मतलब two types of space-based services: space survival services and services through space. मतलब क्या, सैटेलाइट जो होता है अपना, जो अपना अपने मोबाइल या फिर ऐसी चीजों से कम्युनिकेट करते हैं, these are space services. Also space services are space Wi-Fi. ये चीजें अब आ रही है, तो मतलब keep a watch on these things. Second is the government is going to allow people to use ISRO's facilities. Very important, very very important. The government is going to allow the other people to use ISRO's मतलब up to the mark state of art technologies in order for their private purposes, मतलब profit making purposes. क्योंकि इसरो इज स्टेट ऑफ आर्ट, उधर तक प्राइवेट सेक्टर को पहुंचने के लिए जितना टाइम लगेगा उससे अच्छा अगर गवर्नमेंट ने ही अपने सर्विसेज दे दी. और ये गवर्नमेंट इज नॉट डूइंग दिस फर्स्ट टाइम. गवर्नमेंट गिविंग इट्स रिसोर्सेज, आउटसोर्सिंग इट्स रिसोर्सेज टू डिफरेंट प्राइवेट सेक्टर कंपनीज इज नॉट द फर्स्ट टाइम. नाउ मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा. मुझे उस स्कीम के बारे में मतलब स्कीम का नाम नहीं पता, बट जो गवर्नमेंट सेंटर फॉर रिसर्च होते हैं और जहां गवर्नमेंट बहुत पैसा आर&डी के लिए इन्वेस्ट करती है. सो दिस इज अ वेरी रॉन्ग नोशन कि गवर्नमेंट कुछ आर&डी के लिए पैसा नहीं खर्च कर रही है. गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर्पसेस.
Now the problem with this uh, kind of technology is that not all private research and development labs can afford the instruments which the government laboratory uses. So the government laboratories have an upgraded technology. समझ रहे? तो उसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट मेक्स श्योर कि एक मिनट okay government makes sure कि it rents out and outsources its different इक्विपमेंट्स टू प्राइवेट लेबोरेटरीज तो यही कर रही है इसरो भी कि हमारे पास स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी है आप एक काम कीजिए जब जब हमें ये टेक्नोलॉजी यूज करने की जरूरत नहीं है तब तक वी कैन रेंट इट आउट टू यू सो द इसरो विल बी टेकिंग चार्जेस फ्रॉम दीज प्राइवेट कंपनीज बट चार्ज कितना भी हो फर्स्टली एक्सेस देना इज अ वेरी बिग थिंग फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड दूसरी चीज एक करिए कि जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजीज जो होते हैं जियोस्पेटियल टेक्नोलॉजीज आर बेसिकली जीपीएस टेक्नोलॉजीज या फिर जियो सेंसिंग टेक्नोलॉजीज तो गवर्नमेंट डेटा फिल्टर करके सब प्राइवेट कंपनीज को देती है डायरेक्ट एक्सेस टू डेटा गवर्नमेंट कभी भी देती नहीं है फॉर ऑल दी सिक्योरिटी रीजंस बट गवर्नमेंट इज नाउ गोइंग टू लिबरलाइज दिस पॉलिसी and give some access to the private players to the direct data of remote sensing and geospatial technology. This was all about the tranche 4. Now we'll be talking about tranche 5. और tranche 5 में मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो आर्ग्यूमेंट कॉन्स्टेंटली चल रहा है कि अभी के लिए क्या अभी के लिए क्या अभी के लिए मैंने जो पहले 10-15 मिनट जो आपको अलग अलग स्टोरीज बताए उसका मॉरल यही था कि यू कैन नॉट से दैट अभी अभी के लिए क्या अभी के लिए जो जो लग रहा है वो गवर्नमेंट दे रही है एक्सेसिबिलिटी दे रही है जो स्टेट्स मांग रहे हैं वो सब गवर्नमेंट उनको दे रही है डिस्ट्रिक्ट्स को दे रही है बट दिस इज मतलब दिस शोज द कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट कि गवर्नमेंट इज सो कॉन्फिडेंट दैट इट सेज कि सिर्फ कोरोना के टाइम में नहीं कोरोना के बाद जो चैलेंजेस इंडिया फेस करेगी उस टाइम पे वी आर गिविंग इंडिया एन एज अबव ऑल द अदर कंट्रीज नाउ what are the different things in the tranche 5 मैं सब तो कवर करने नहीं वाला बिकॉज सब इतने इंपॉर्टेंट भी नहीं है थोड़े से बोरिंग भी है बट देयर आर 7 to 8 things which I'm going to cover first firstly is education sector में they have done 5 to 6 things first is ये स्वयं प्रभा डीटीएच चैनल पहले ही ये चैनल है चालू ये नया चैनल नहीं है दिस इज ओनली 3 channels right now but they are going to do expand it to 12 channels and every channel will have one standard का curriculum going on for the day 24/7 360 द गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम आपको एक स्वयं प्रभा चैनल हम फ्रॉम क्लास 1 टू क्लास 12 के लिए हर एक स्टैंडर्ड का एक डेडिकेटेड चैनल रखेंगे अंडर दिस स्कीम कॉल्ड पीएम ई विद्या तो एक चैनल पर स्टैंडर्ड दूसरा चीज क्या है दे हैव परमिटेड 100 टॉप यूनिवर्सिटीज ऑफ इंडिया टू स्टार्ट देयर ऑनलाइन कोर्सेज फ्रॉम 30th मई तो एजुकेशन शुडंट स्टॉप वो उन्होंने बहुत अच्छा स्टेप लिया है थर्ड इज they have also given ये स्वयं प्रभा चैनल में से 4 hours daily to state governments to air their own programs educational programs तो जो state टेक्स्ट बुक्स होते हैं उनमें जो अलग अलग कंटेंट होता है उनके जो कंटेंट बेस्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो करने के लिए भी इन फेडरल पॉलिसी चेंज उन्होंने स्वयं प्रभा चैनल के डेली 4 hours आई डोंट नो इफ इट्स फॉर एवरी स्टैंडर्ड बट इट शुड बी फॉर एवरी स्टैंडर्ड 4 घंटे स्टेट्स के साथ शेयर करेंगे अब one of the very important things which the government has done, it has started a channel called Manodarpan. Now, Manodarpan is a mental health and emotional well-being channel. ये बहुत ही इनोवेटिव और वेलकम स्टेप है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट इट्स फोकसिंग ऑन द मेंटल एंड इमोशनल वेलबीइंग ऑफ टीचर्स एज वेल एज स्टूडेंट्स ये अनप्रेसिडेंट है इंडियन गवर्नमेंट मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस नहीं देती ये जो कुछ एलिगेशंस है इन एलिगेशंस के लिए ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट स्कीम है नाउ विल गो ऑन टू द मोस्ट controversial step in this 5 days ka reform. I mean, if you count, this is the most controversial step in the 5 day ka reform, which is Manrega. Manrega has been allotted 40,000 crores to already existing 60,000 allotment.
तो आई रिमेम्बर 2014 का जो मोदी जी का स्पीच था कि मैं मनरेगा आगे बढ़ाता रहूंगा बिकॉज मुझे ये डंका बजाना है, क्योंकि स्वतंत्रता के 60 साल बाद भी कांग्रेस को लोगों को गद्दे भेजने के लिए मतलब भेजना पड़ा। ये जो पूरा स्पीच था, इसके बाद आफ्टर 6 years हाउ द टर्न टेबल्स कि the government has to rely on मनरेगा to provide almost 300 crore man hours of jobs. Now man hours मतलब man days, sorry, work days, 300 crore work days will be provided. अब होता ऐसा है कि हर आदमी को 100 days work is assured under the मनरेगा scheme. अगर 100 days work is assured to every government, every deserving candidate in मनरेगा, तो 300 crore our work days divided by 100 is basically 3 crore people will be benefited from this scheme. So 3 crore लोगों के लिए ये स्कीम बेनिफिशियल होगी. This is ये 300 crore days is a again a statistical gimmick. It's a multiplication of sorts, but in reality 3 करोड़ लोग इससे बेनिफिट होने वाले हैं मनरेगा स्कीम से. अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसा होगा? व्हाट पीपल आस्क मी व्हाट इज योर ओपिनियन कि मनरेगा पहले बहुत बोला मोदी जी ने मनरेगा के बारे में, और अब वो मनरेगा की ही हेल्प ले रहे हैं. नाउ दिस कैन बी इंटरप्रेटेड इन टू वेज. The first way it can be interpreted in is Modi ji being a statesman has had criticized Manrega first, but then year after year, when he realized the importance of Manrega scheme, um, he gave it importance like a statesman without having any political ego. कि अच्छा ये मैंने इस स्कीम को मैंने नाम रखा था, तो अब मैं स्कीम का कभी यूज करने नहीं. ये जो पॉलिटिकल ईगो होता है, ये बाजू में रख के नरेंद्र मोदी हैज गॉन इनटू क्रिएटिंग क्या बोलते हैं स्टेट्समैन लाइक मनरेगा स्कीम. जो on the other side of the story, जो लोग people don't like Modi, don't like this government, will say कि look, देखा ना, देखा मोदी को कैसे इस स्कीम की मदद लेनी पड़ी. तो नाउ दिस मूव इज ओपन टू इंटरप्रिटेशन. जिसकी जैसी सोच, जिसको जैसा सोचना है वो सोच सकता है. वी आर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एटलीस्ट नाउ फॉर नाउ, और रहेंगे भी. मतलब एटलीस्ट फॉर नाउ बोलने की कुछ जरूरत ही नहीं थी इधर. इट्स अ लिबरल स्लैंग बाय द वे. हर चीज बोलेंगे ना, वी आर अ सेक्युलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री, उसके बाद में बोलने का एटलीस्ट फॉर नाउ. तो मतलब जस्ट टू सिग्निफाई कि मोदी हैज नॉट टेकन एनी स्टेप लाइक दैट, बट ही जस्ट माइट. तो दिस इज बीएस, प्योर बीएस. अब I have always had this reservation against Indian government, be it any party, be it any government, be it any leader, कि जब तक लोग मरते नहीं तब तक गवर्नमेंट को मतलब क्या बोले, मतलब कुछ सुधार करने की आवश्यकता लगती ही नहीं है. जब तक लोग मरना चालू नहीं होते तब तक गवर्नमेंट को ये एकदम स्ट्राइक नहीं होता कि अरे ये करना चाहिए था. तो इट्स लाइक अ सैक्रिफाइस सिस्टम कि इतने इतने बलि चढ़ने के बाद ही गवर्नमेंट नाम का जो देवता होता है वो प्रसन्न होता है. ऐसा कुछ चल रहा है. एंड दैट्स बीन गोइंग ऑन फॉर ऑल द 70 years वी हैड ऑफ इंडिपेंडेंस. मतलब आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ये जो प्रभा देवी स्टेशन है, प्रभा देवी स्टेशन मुंबई में, यहाँ 60-70 लोग मरे थे लास्ट टू लास्ट ईयर बिकॉज ऑफ अ कंजेशन ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म. रेलवे प्लेटफॉर्म का ओवरहेड ब्रिज होता है, उसके स्टेयरकेस पे कंजेशन हुआ और कुछ बहुत लोग मरे. उसके बाद आर्मी को बुलाया गया, आर्मी से 3 ब्रिज बनवाए गए, चकाचक बड़े बड़े ब्रिज, मतलब भाई बहुत ही बड़े ब्रिज. बट उसकी कंप्लेंट्स पिछले 13 साल से लोग कर रहे थे कि ये ब्रिज बदलो, ये ब्रिज बदलो, लोग मरेंगे. एंड जब मरे तभी गवर्नमेंट को ये. तो मतलब मेरा तो ये एनालॉजी है, इट्स वेरी हर्टफुल एनालॉजी. और गवर्नमेंट के मंदिर में जब तक बलि चढ़ती नहीं है तब तक गवर्नमेंट नाम की देवता कभी प्रसन्न नहीं होती. तो दैट इज माय पर्सनल रिजर्वेशन. और इसी इंसिडेंट से कि जब तक कोरोना से लोग मरे नहीं, जब तक हमारी हेल्थ सिस्टम कितनी इनएडिक्वेट है,
ये समझ में नहीं आया, तब तक गवर्नमेंट ने क्या किया? कुछ नहीं। अभी क्या कर रहे हैं? पब्लिक एक्सपेंडिचर हेल्थ ऑन टू बी इंक्रीज्ड, एवरी डिस्ट्रिक्ट टू हैव इन्फेक्शियस डिसीज हॉस्पिटल ब्लॉक्स, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लैब नेटवर्क्स। मतलब ये पहले नहीं कर सकते थे? ये आपको पहले स्ट्राइक नहीं हुआ कि इफ एट ऑल सम डे ऐसी कोई महामारी आई तो हम क्या करें? इसका प्रिपेयर्डनेस किसी गवर्नमेंट के पास नहीं था। 6 साल आपको पीपल हैव गिवन यू द रूल एंड यू डिड नथिंग। तो मतलब जब तक लोग मरते नहीं ना, तब तक गवर्नमेंट को तो आने ही नहीं वाला। तो पीपल शुड डाई फॉर द गवर्नमेंट, फॉर गवर्नमेंट टू टेक एनी स्टेप्स। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में। कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में मिनिमम थ्रेशोल्ड जो था, अब हम आएंगे कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब क्या? इंसॉल्वेंसी। देखो, मतलब इन द वर्ड्स ऑफ द ग्रेट कैरी मिनाटी की सबकी फटी पड़ी है, एंड वी आर ऑल राइट नाउ इन अ काइंड ऑफ रिसेशन। अभी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है किसी भी गुड्स और सर्विसेज का, इकोनॉमी बहुत ठप है। तो इस सब में क्या होता है कि डेट बढ़ती जाती है, और डेट बढ़ने के कारण कभी कभी डेट इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसका एनपीए हो जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और बिकॉज ऑफ दीज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एंड piling up debts, a company is forced to go belly up. It is insolvent. तो ऐसे टाइम पे द गवर्नमेंट हैज डन वन थिंग। सो द पीपल हु आस्किंग कि अभी क्या कर रहे हैं कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को इससे क्या मिला? ये मिला कि मिनिमम थ्रेशोल्ड टू फाइल इंसॉल्वेंसी केसेस हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹1 लाख टू ₹1 करोड़। तो देखो, अगर मैं कंपनी हूं और मुझे 50 लाख का एनपीए है और 50 लाख की मेरी लोन है या फिर वैल्यूएशन है कंपनी का, तो डेट और डिफॉल्ट का डेफिनेशन बदल के, डिफॉल्ट का डेफिनेशन बदल के 1 लाख टू 1 करोड़ कर दिया गया है कि मतलब 1 करोड़ के नीचे किसी का भी इंसॉल्वेंसी नहीं होंगे। और एक बहुत इनोवेटिव चीज इस गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की है, और वो है ये टर्म, कोविड-19 रिलेटेड डेट will be excluded from insolvency proceedings. Government is yet to clarify what is COVID related debt. Government is yet to clarify how this debt will be restructured or tackled. But the government has said कि COVID related जो कुछ भी debt होगी उसको हम insolvency की तरह नहीं treat करेंगे. So that is a huge measure. But now we have to see how this COVID related debt unfolds in front of everyone. अब आता है और एक इम्पोर्टेंट स्टेप, ये है डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो अगर किसी के पास किसी कंपनी के डायरेक्टर्स ने या फिर मैनेजर्स ने अगर कोई कंपाउंडेबल ऑफेंसेस किए हैं रिलेटेड टू डिफॉल्ट, रिलेटेड टू माल प्रैक्टिसेस ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज एंड टैरिफ्स, इनकम टैक्स फ्रॉड्स, ये सब जो होते हैं, इस टाइप के अगर कुछ फ्रॉड और कंपाउंडेबल ऑफेंसेस होंगे तो उनको क्रिमिनल लॉ के अंडर ट्रीट नहीं किया जाएगा, उनको सिविल लॉ के अंडर ट्रीट किया जाएगा। तो क्या होता है कि ये जो डर होता है कि हम आपको बेड़िया आपके हाथ में पहनाएंगे, और ये जो कांस्टेंट फियर दिखाया जाता है कॉर्पोरेट्स को, इसके वजह से ये एक्सपेंशंस है, कुछ थोड़ा सा लिबरल पॉलिसीज है बिजनेस वाले, ये उठाते नहीं। और बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स इकोनॉमी काइंड ऑफ सफर्स because of this constant gun which is held by the government to the heads of corporates कि आपको हम बेड़िया पहनाएंगे। तो ये बेड़िया पहनाने वाला सेंटेंस ही गवर्नमेंट ने इस क्लॉज से निकाल दिया। द गवर्नमेंट इज सेइंग कि we will treat these compoundable offenses as civil, under civil law and not criminal law। तो क्या होता है, गवर्नमेंट has nothing to lose in this, but the corporate sector has its reputation to lose, and reputation is a lot more important in the corporate sector than the government sectors. गवर्नमेंट सेक्टर में आपको माल प्रैक्टिसेस करोगे तो आपको बेच देंगे ट्रांसफर करके कहीं और। कॉर्पोरेट सेक्टर में आपका बिजनेस जा रहा है, your reputation is equivalent to your business. If you are not a good person, reputed person, or with a clean image, तो आपके साथ कोई बिजनेस करेगा नहीं। A small example to give will be Chanda Kochar. Chanda Kochar was one of the very brightest and very much celebrated women entrepreneurs of India. But what happened? She went into a scam kind of thing, which is alleged of internal conflicts which she neglected, और जो neglect था वो criminal neglect था।
ऐसे जो कुछ चीजें थी जिसकी वजह से आईसीआईसीआई बैंक को लॉसेस फेस करने पड़े, वो बड़ा वीडियोकॉन और बाकी के चीजों का एक डिफरेंट सेगमेंट है. दैट इज नॉट व्हाट वी आर गोइंग टू ड्वेल इनटू. वी आर गोइंग टू ड्वेल इनटू दिस होल प्रिजम्पशन कि government can hamper the reputation of corporates just on suspicion. ये जो गन है, ये जो बंदूक है, ये हमको निकालनी है कॉर्पोरेट सेक्टर से. सो नाउ गवर्नमेंट इज एक्टिंग वेरी बिजनेस फ्रेंडली इन अ वे कि वो बोल रही है कि आपको इंसॉल्वेंट नहीं डिक्लेयर किया जाएगा, आपको आपके डिफॉल्ट को डिफॉल्ट नहीं बोला जाएगा इफ इट्स कोविड रिलेटेड, इफ इट्स बिलो 1 करोड़. तो इट्स वेरी बिजनेस फ्रेंडली स्टेप. सो ये सब चीजें हैं. और जो बाकी ऑफेंसेस होंगे वो एनसीएलटी या फिर उसकी जो अपीलेट होती है एनसी एनक्लैट, उस उधर ना ले जाते, वो हम इंटरनल आर्बिट्रेशन में ही सॉल्व कर सकेंगे क्या, ऐसा कंपनीज को ऑप्शन दिया गया है. मतलब आगे आने वाले पीरियड में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल अपीलेट कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को ज्यादा बर्डन केसेस का ना आए, तो आप इंटरनली ये सॉल्व कर दीजिए. ये भी ऑप्शन गवर्नमेंट कंपनीज को दे रही है. अब तीसरा चीज है, मतलब सेकेंड लास्ट चीज है, इस पब्लिक सेक्टर पॉलिसी वेरी इंपॉर्टेंट. All sectors to open for private sectors. Public sectors are going to play very important role here, but not to the level which it played before. So now government is going कि हम private sectors को हर एक sector में invite कर रहे हैं ना. ये अनाउंसमेंट बहुत अच्छी थी. ये अनाउंसमेंट की मतलब हम बोलेंगे ना, इंटेंशन बहुत अच्छा था. हाउएवर गवर्नमेंट हैज केप्ट इट सीक्रेट. वो मराठी में बोलते हैं कि हम गुलदस्ते में रखेंगे इसको. ऐसा करके गवर्नमेंट हैज डन टू थिंग्स. फर्स्टली इट हैज सेड कि मतलब हाँ, प्राइवेट सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट हम ओपन करेंगे, सब सेक्टर्स हम ओपन करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स के लिए. बट उन्होंने बताया है कितना ओपन करेंगे, कब तक ओपन करेंगे, किसके लिए ओपन करेंगे. ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है. डेविल लाइज इन द डिटेल्स. अगर कल गवर्नमेंट आके बोली कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में हम सिर्फ 10% इन्वेस्टमेंट करेंगे, देंगे प्राइवेट सेक्टर, तो ये मतलब कुछ बनता नहीं इसका. इट डजंट मेक एनी सेंस टू जस्ट गिव 10% allocation फॉर प्राइवेट प्लेयर्स इनटू सच थिंग्स. तो now we have to just wait and watch that how much openness is the government willing to give to private sectors in all the sectors. It won't be uniform. Of course, it won't be uniform. It will be differed from sector to sector, but we will have to see ki, is it reasonable in every sector. अब चौथी और आखिरी चीज, ये मतलब हम ट्रांच 5 कवर करेंगे, उसके बाद मैं थोड़ा सा एनालिसिस करूंगा इन स्टेप्स का. स्टेट गवर्नमेंट्स को जो रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट देती है इन लाइन विद द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन, वो एडवांस में ही सेंट्रल गवर्नमेंट रिलीज कर रही है. और गवर्नमेंट हैज सेड विद द टू द रिक्वेस्ट ऑफ दीज स्टेट गवर्नमेंट्स कि हम जो जीएसडीपी के रिलेटिव में जितना स्टेट गवर्नमेंट का बोरोइंग पावर होता है, विच इज 3%, हम उसको बढ़ा के 5% करेंगे. बट इट्स कंडीशनल. मुझे तो थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा आपको समझाने के लिए कि जीएसडीपी टू बोरोइंग रेशियो क्या होता है. ग्रॉस डोमेस्टिक स्टेट प्रोडक्ट जो होता है, वो जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ स्टेट. ये समझ लीजिए, इन द टेरिटरी ऑफ द स्टेट जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका वैल्यूएशन जो होता है, उसके वो, सो दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ ऑल द मार्केट इन अ स्टेट. तो गवर्नमेंट का जब बजट प्रेजेंट करती है कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, तो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर में जो गैप होता है, वो पूरे बजटरी एक्सपेंडिचर से कंपेयर कभी नहीं करते. वो कंपेयर करते हैं स्टेट जीडीपी से. मतलब अगर ये छोटा सा मैं एग्जांपल दूंगा, मैं मार्केट लूंगा. अगर मार्केट में 100 सब्जी वाले हैं और हर एक सब्जी वाले के सब्जी की वैल्यूएशन है 10 रुपए, तो 100 सब्जियों वाले की वैल्यूएशन होगी 1000 रुपए.
100 सब्जी वाले इंटू 10 रुपीज 1000 रुपए हो गई। उस स्टेट में सिर्फ सब्जी वाले ही बैठते, हम ये अज्यूम करेंगे। तो उन सब्जी और उस स्टेट गवर्नमेंट ने अगर 200 रुपए का एक्सपेंडिचर बजट डाला और उनका इनकम इज ओनली 100 रुपीज, जो स्टेट गवर्नमेंट का इस स्टेट में 100 सब्जी वाले हैं, हर सब्जी वाले की वैल्यूएशन 10 रुपए है, तो टोटल GSDP इज 1000 रुपीज ऑफ दिस होल स्टेट। नाउ द स्टेट गवर्नमेंट का बजट इज रुपीज 200, जो खूब खर्च करेगी सरकार, और द रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इज रुपीज 100। तो डेफिसिट कितना है? वो डेफिसिट ऐसा नहीं देखा जाएगा कि 200 बजट है और 100 का डेफिसिट है तो 50% डेफिसिट है गवर्नमेंट का, नहीं, ऐसा कभी नहीं देखते। कैसे देखते हैं कि स्टेट का वैल्यूएशन अगर 1000 है तो 1000 के कंपैरिजन में ये 100 रुपीज कितने हैं? सो इट्स 10%। सो द डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट इज 10 रुपीज, 10% ऑफ द स्टेट। ये डेफिसिट टू GSDP इज दिस रेशो। तो इसी रेशो में आप अप्लाई कीजिए बोरोइंग लिमिट टू GSDP। तो 1000 के इस स्टेट GSDP के कंपैरिजन में स्टेट को अगर 3% बोरो करने का अलाउंस है, मतलब 1000 का 3% कितना आता है? 30 रुपीज। तो अभी स्टेट गवर्नमेंट को सिर्फ 30 रुपीज बोरो करने की ही परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि हमको 5% तक बोरो करने की इजाजत दीजिए। तो द गवर्नमेंट इज सेइंग कि हम देंगे कंडीशनली। अब ये क्या कंडीशन है? तो आप 3% से 5% का एक टाइमलाइन निकाल दीजिए। इस टाइमलाइन में बीच में एक 4% का भी लाइन लिख दीजिए। मैं आपको ये नोट्स बाद में शेयर करने वाला हूँ, आज लास्ट दिन है, इसके बाद सब नोट शेयर हो जाएंगे। फर्स्ट 0.50% बिटवीन इन दीज 2%, ये 2% का आप ये पूरा एक सेट ले लीजिए। तो इन 2% में जो 0.50% है दैट इज अनकंडीशनल। तो आपको 5 रुपए 20 रुपए का जो लिमिट है, हम वो सब्जी वाले के गवर्नमेंट के ही हम हिसाब लेंगे कि अगर आपके बोरोइंग लिमिट पहले 30 रुपए है और आपको वो 50 रुपए तक बोरोइंग लिमिट लानी है, तो 5 रुपए की बोरोइंग लिमिट बढ़ाना अनकंडीशनल है हर स्टेट के लिए। अगला जो 1% है विच इज 10 रुपीज इन आवर मॉडल, दैट 10 रुपीज will be allowed to you when a state government applies all the reforms of the first 4 tranches. तो 2.5 rupees, 2.5 rupees, 2.5 rupees and 2.5 rupees हर स्टेट गवर्नमेंट को इन स्टेप बाय स्टेप मैनर अलॉट किए जाएंगे when these state governments employ and start the reforms suggested by the 4 tranches previously. आप अगर समझ नहीं रहा है तो आप कमेंट कीजिए, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मुझे समझ रहा है। और तो पहले का 0.50% अनकंडीशनल, उसके बाद का 1% है कंडीशनल कि हर एक ट्रांच अप्लाई कीजिए आपको 0.25% मिलेगा। तो 0.50%, 0.2.5, 0.2.5, 0.2.5, 0.2.5, तो ये हो गया 1.5% का इंक्रीमेंट विच इज कंडीशनल विथ 0.50 अनकंडीशनल। आखिरी का जो 0.50 कंडीशनल है वो कहता है कि अगर आपने इन रिफॉर्म्स में कोई माइलस्टोन अचीव कर दिया, फॉर एग्जांपल ईज ऑफ बिजनेस में स्टेट 1 नंबर पे आया, कंपनी के कोई लॉज में या फिर लेबर माइलस्टोन अचीव किया, एक्सेलेंट जॉब किया, तो आपकी बोरिंग लिमिट कर दी जाएगी 5% या फिर तब तक आपकी 4.5 ही रखी जाएगी। ये है द कंडीशनल इंक्रीज ऑफ बोरोइंग इन रिलेशन टू द स्टेट GSDP। तो ये था ट्रांच 4 एंड ट्रांच 5 का एनालिसिस। हाउ इज दिस स्टेप टू स्टेप प्रूडेंट और ये सब चीजें की हम बात करेंगे। इसके लिए एक और अलग सा वीडियो हम लाएंगे, वो लाइव नहीं होगा, इट विल बी अ
a proper 5 to 6 minute video, which will be released in this week itself. बट तब तक आप ये चैनल पे ट्यून करते रहिए. अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए. आपको आपके दोस्तों को बताइए अबाउट दिस सीरीज. इट्स अ 3 hour full intense series which covers almost all the major reforms. In the end, I would like to thank all my research team, which is Vignesh Narayanan, Rishikesh, Satvik, Utsari, Prathav, Abhiraj, Manav, Sriya Papade, then people who have helped me in this series and making and all the directions they have given me. Uh, my team contributes immensely in the production and research of these series. I cannot forget to thank these people. Again, I will thank all the people who have joined me in the series from time to time, supported this initiative. Um, let us all pray and hope that this crisis ends up as soon as possible and we go out again to back to normal. Uh, and we end our series on a very higher note. And I'm very satisfied with this series. The content which has been delivered is absolutely gold. तो अगर आपको शेयर करना है तो आप जरूर आपके दोस्तों के साथ ये सीरीज शेयर कीजिए. हम ऐसे ही नए नए इनिशिएटिव्स के द्वारा मिलते रहेंगे. तब तक जय हिंद एंड नमस्ते अगेन.